in this discussion panel of Swaraj Khabar Live, right from the day of independence, India has been facing a lot of challenges, and a lot of challenges were facing the country. And among them, the foremost was the conditions of scheduled caste and scheduled tribe. The persons who enacted our constitution took a special care to see that now this section of the society really gets justice in independent India. And there have been many provisions being created to ensure that. But despite the fact that all the parties claim to be working for them, there are many sides and many things they are yet to be addressed, and their situation is yet to take a shape which is being envisioned at that time. So we have got friends from Republican Sena. This is an organization being floated by the grandson of Baba Sahib Ambedkar. And I would like to know from my friends here, who are the senior members of this Republican Sena, why they felt the need to create this organization. May I address you, sir? Why do you think you required? Thank you, Mr. Mudgil, for asking me a question which very required, very much required. The need of creation of Republican Sena was because the Dalits, the downtrodden, what their situation was before independence, they are still in the same situation. They are still sailing in the same boat. Their upliftment was the purpose of this constitution, which is not being fulfilled by any of the governments, whether it was BJP, Congress or any other party. The situation of Dalits remains same. Our purpose is to uplift their living conditions, their economic upliftment, their social upliftment. We want to do that. What do you think, sir? What is the reason why the desired results could not be obtained? The thing is that, first of all, or at the outset, my sincere thanks to Swaraj Khabar और उनके दर्शकों को मेरा जय हिंद. The thing is that the government is putting their best efforts, no doubt, and all the government are putting their best efforts. Whosoever would be the result of getting the dreams realized of Baba Sahab is very, very important. And that is why the Republican Sena came into the inception. Because we know very well that in the society, the discrimination is just spreading everywhere. The main vision of the Baba Sahab was to eradicate the injustice, to bring the equality in terms of the economy, in terms of the social status. Because inequality is spreading everywhere and all that. Particularly, the women's empowerment is very much needed and all that. In a present scenario, and that every people, whether it is the man or the woman, they are bringing the economy by keeping the soldier to soldier and all that, right? So in 1951, when he was the first law minister of this country, he brought a Hindu code bill in the parliament. The purpose was bringing that Hindu code bill was to bring the equality in the systems, to empower the women. If that bill was passed, unfortunately it couldn't pass, that is why he has to resign from the parliament and all that, right? So if it would have been passed, then the women would have get the equal right in the ancestors' property. The widow would have the right in the property. There wouldn't be any discrimination on a son and daughter and all that, right? But the 50% majority of this country are the women, female. And politicians, they are trying to have the dirty politics on the 50% population because they are their vote banks and all that. So that is why, and this is the basic reason that the government is not getting it realized, the dream of the Baba Sahab. Well, sir, I would like to ask you how your party is different from other parties. All the parties claim to be working for the scheduled tribe and OBC. How for your party is different in that respect? First of all, Mudgalji, thanks for inviting my Republican Sena families members on this stage. English,
a most respected language, but I hope Hindi is the most respected language because it's our national language. So I would like to reply with Hindi language. You may. पार्टियां आई, पार्टियां गई, पार्टियां आती रहेंगी। हम यहाँ पार्टी चलाने के लिए नहीं, एक बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। और जो सपने बाबा साहब ने लेके एक संविधान हमारे देश को दिया था, जिसका आज भी अभी तक भी वो संविधान अगर आप देखें, कागजों में लागू होना एक अलग चीज है, पर क्या वो धरातल पे इम्प्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। तो वो जो संविधान बाबा साहब ने लिखा, हम चाहते हैं कि वो संविधान धरातल पे, जमी पे वो लोगों तक पहुंचे। लोग वो अपने हमारे दलित समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग जो भी हैं, उन तक पहुंचे और वो उनका पूरा फायदा उनको मिल सके। ये हमारा एक मिशन है और इस मिशन को कामयाब करना, इस मिशन को उस सिरे तक ले जाना, ये हम सब लोगों का एक सपना है। हम लोग जिसके लिए पूर्णतः वचनबद्ध, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा मकसद पार्टी चलाना नहीं है, हमारा मकसद राजनीति में अंदर जाके उस गंदगी को साफ करना है जो हमारे दलित समाज के लोगों के साथ आज तक होता रहा है, उसको खत्म करना है। नहीं, देखिए देश में बहुत सारी पार्टीज जो हैं जो अपने आप को दलित का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मानती हैं, उनमें और आपके जो वर्किंग है उसमें क्या फर्क रहेगा? बहुत मेजर फर्क है। इस बात को शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक मंदिर के अंदर कोई पंडित है और वो उसकी पूजा करने के लिए भगवान की पूजा करता है। जिसकी पूजा कर रहे हैं वो पूजा करने के लिए दुनिया आती है, उनको पूज के चली जाती है, लेकिन अब उस मंदिर की प्रतिमा की जगह वो स्वयं भगवान आ गए हैं, तो आदमी को कैसा फील होगा? तो फिर तो लाइन लग जाएगी ना। इसी तरह से आज की तारीख में जिस हम पद की बात कर रहे हैं, जिन राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय सर सेनानी आनंदराज अम्बेडकर साहब, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खून हैं और वो इसलिए आए हैं क्योंकि जो अम्बेडकर साहब चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली काम उन लोगों ने नहीं किया, जो अम्बेडकर का नाम लेकर उसकी नीतियों को लागू करना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि संविधान तो दिया, संविधान में क्या लिखा उसको इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य किया जाना था सरकारों के द्वारा वो नहीं हुआ, इसलिए उनको आज पॉलिटिक्स में आना पड़ा। अदरवाइज वो बहुत पहले आते तो ये बहुत सारा गंदगी पहले से ही खत्म हो जाता, आता ही नहीं। इसमें क्या नहीं हुआ है, क्या रह गया है, उस एस्पेक्ट को जरा क्लियर करेंगे? बताता हूँ। जैसे कि हमारे इस मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास में तो बहुत अच्छा लगता है कि सब खुशहाल हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास सुविधाएं नजर आती हैं, लेकिन इस गांव देहात को छोड़कर करीब 1000-1200 थोड़ा सा दूर जाएं, उस देहात के अंदर आज भी वही हाल है। आज भी स्वर्ण जातियां जो नीच लोग समझे जाते हैं उनकी मानसिकता के द्वारा उनको अभी भी शिकार होना पड़ता है। क्या आप पेपरों में नहीं पढ़ते हैं कि उन लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और उनको जो जलील करने वाली हरकतें हैं, जिनको शब्द हम नहीं बोल सकते, इस तरह के उस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है। तो समस्या का समाधान कहाँ निकला? प्रेमी जी वकील भी हैं और शायद मतलब इस बारे में तो कानून काफी बना हुआ है, सख्त कानून बने हुए हैं। लागू करने वाले कौन है? लागू करने वाले भी वही सामंतवादी हैं, उनकी इच्छा से कानून लागू होते हैं। समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है, समस्या प्रोविजंस की नहीं है। कानून हमारे पास ढेर सारों हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता। आज की तारीख में बाबा साहेब ने कहा था धर्मनिरपेक्ष। हर ऑफिस में चले जाइए आप, सरकारी ऑफिस में, वो सभी अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं। किसी भी IAS बनता है संविधान की शपथ लेकर बनता है। उसके ऑफिस में आप भगवान की मूर्ति टंगी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्यों मिलती है और क्यों मिलनी चाहिए? यदि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, उसी जगह पे वो अधिकारी गलत है, उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन हुआ है? लेकिन ये तो आस्था का सवाल है ना, ये एक व्यक्ति का आस्था अपने घर तक सीमित होनी चाहिए, ऑफिस में नहीं। सरकारी ऑफिस में नहीं होनी चाहिए आस्था, घर तक सीमित रखिए, आप जो भी करना करिए। तो ऐसे तो आप पूरे जो भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसका उद्घाटन भी मंत्रोच्चारण से होता है। बिल्कुल गलत है, वेरी रॉन्ग। आपका इसमें क्या है? The citation of mantras that comes from the Vedas and all that become the traditions. It's depend upon the one's organizer that it should be continue or not. But the spirit of the party or the individual, those who are responsible for executing the policy and program,
that should be very, very much selectified. It must be very neat and clean. They must focus to listen the grievances of the common people. And similarly, they also should be prone to redress the grievances at earliest moment. Well, Then the good governance will take place. This is my perception. initially it was being perceived that giving a reservation will eradicate a lot of problems. Reservation in the educational institutes, in the services. How far it has been able to address the problem, if I would like to know. Yeah. The reservation that comes under the Article 330 to 335 of the Indian Constitution, no doubt, and that has been given by Honorable Baba Sahab. But the purpose was that to bring the Dalit, uneducated peoples, downtrodden section of the society in a streamline. Okay. But unfortunately, our politicians, particularly the Congress, who was swayed this country for more than 60 years, haven't focused on that aspect. If the reservation came into existence, came into enforcement just after the constitution has enacted, then no doubt this problem will not be occurred, isn't it? So this problem is automatically or intentionally generated by some political leaders for their own interest, isn't it? The second point is that the reservation is very, very much essential. Essential for those who are deprived sections. They are deprived from economically, they are deprived from the education and all that. But it has been observed that the particular people who took first advantage of reservation, their fathers, their more families, their children are getting the benefit, and they are depriving the have-nots within their own community. Yeah. So what about what is your aspect on the creamy layer which has created, which has taken shape in this country within reservation? So I'll reply that. Creamy layer economy was not the criteria of reservation. Social system was the criteria. Social stigma was the criteria. My caste was the criteria. Not my status, how much I am earning, was not the criteria. Why creamy layer? Because I am deprived of my rights today also on the basis of my caste, not on the basis of my status or my economic conditions. No, that's a social problem. We are No, by reservation we are addressing the economic problem, not the social problem. Reservation is a representation in the system. No. My point over here is that when you provide reservation in the services, that is for to provide economic status and benefit to the deprived. Right. But now I've seen some families whose grandfather was IAS, and the entire family of 6 or 7 people, now they are IAS because they had a very good education. Now they are competing with have-nots, which are deprived. So particular families or clan of families have captured all the benefits. So the first reason is that no doubt this is a administrative fault. Administration must be sincere enough and all that. The second thing is that due to the lack of education in a mass level of the Dalit family, Dalit community, the elite class people from Dalit itself is getting the undue advantage. Isn't it? That's your questions and all that. It is prevailing, no doubt. It should be checked out, and checked out through the administration, through the governance and all. Will your party take a stand on this? Yeah, surely, because we are running the philosophy of Baba Sahab to bring the equality, justice. I will try to highlight another aspect of the census, which shows that all the scheduled caste and scheduled caste particularly, they are skilled class in India. Each and every scheduled caste has a particular skill. And the problem is that they have a capacity for self-employment, but they have been deprived by bank finances. So government has started a Maudrake bank today to provide finances at that level, and they constitute a lot.
And you might be having a news that there is a forum in Bombay in which scheduled caste businessmen and entrepreneurs have formed a forum for that. How would you like to react to it? That's a good step, no doubt, because the person who are deprived, economically deprived, they don't have such kind of the approach financially or some other ways and all that, right? So this is the good way and to get the financial assistance and all. नहीं, इसमें भी मुल्क साहब, इसमें समीक्षा उस तरह से नहीं की गई। एक्चुअल क्या है कि जो खेती करता है वो जमींदार नहीं करता। इस बात को समझने की जरूरत है। खेती करने के लिए एक दलित समाज का बंदा जाता है वहाँ पे, वो खेती करता है, बट जब आप लोन के लिए जाते हैं किसी भी व्यवसाय में, तो आप देखिए कि लोन की टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। करण ने काम शुरू किया, व्यवसाय किया, किसके नाम से किया? मेरे पास प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, मैं किसी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो बिजनेस किसी और के नाम से होता है। तो वो जो लोन जो अप्रूव होता है वो किसी अदर पर्सन के नाम से होता है, वो टोटल पैसा उसके पास जाता है, उसकी कुछ मनी जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक मनी या हरासमेंट करने वाला पैसा, वो उस मजदूर आदमी को मिलता है। अभी सरकार जो है मतलब ब्लॉक स्तर पे इंग्लिश मॉडल स्कूल्स को जो है, क्योंकि आज ग्रामीण स्तर पे मेरे ख्याल जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वही रह गया है, बाकी तो शहरों की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो उस पे आपका क्या विचार? गवर्नमेंट तो पिछले 3 साल से सीसी कैमरे भी लगा रही है, जब खोलेगी तब हम जरूर विचार देंगे। बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरे ख्याल ये अप्रूवल तो उसका हो ही गया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अप्रूवल तो संविधान भी हुआ था, इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। नहीं, अच्छी बात है अगर होता है तो हम उसकी सराहना करें। हाँ, उसकी सराहना करने वाली चीज है, उनकी सराहना भी की जानी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सारी अनीति ही यहाँ होती ही है, कुछ उसमें ऐसी नीतियां भी बनती हैं जो सबके कल्याण के लिए हैं। अगर सबका विकास होता है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ लोगों को दबा के और केवल कुछ मात्र लोगों के लिए कुछ काम किया जाता है तो वी आर अगेंस्ट देम। मैं कुछ कहना चाहूंगा हिंदी में। हम सबके वास्ते अधिकार होना चाहिए, हम सबके वास्ते अधिकार होना चाहिए। वार होता है अगर प्रतिकार होना चाहिए। कब तक जिंदा रहोगे लेके ये मजबूरियां, गर स्वीकार नहीं तो इनकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और भाषा चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान में हिंदी का बोला बाला हर बार होना चाहिए। इसी खूबसूरत शेर के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे।